Tap the bell icon on the YouTube app and never miss out on unique stories from 101 India. I went to see the Great Golden Circus out of nostalgia. A past that was my childhood. Today, the women of the circus make up for 60% of the performances. I found resonance in what I saw, but then I was privy to something I couldn't have ever fathomed in my childhood. To get a peek into the lives of the women that make the Great Golden Circus. Manzil is a young girl from a small village in Assam. She's the biggest crowd puller at the circus, with her acts of contortion and her hula hoop dancing being the most popular. I thought she was the sexiest, the most glamorous of them all, till I actually met her. आपको हमेशा से मन था क्या सर्कस आने का? नहीं, हमेशा मन नहीं, जब मेरा दोस्त बोला तभी मैं आया। सबसे पहला कौन सा आपको आइटम दिया था करने का? पहला आइटम साइकिल दिया था मेरे। अच्छा। Pinky was another young recruit who was working day and night perfecting her skills. It was amazing the kinds of things these girls could do. I went backstage expecting divas, but what I found was a college dormitory-like space, where every girl was trying to make the best of the reason they had left their homes for. Life wasn't exactly as fun for them as I had imagined in my head. In the morning, they wake up at 6 o'clock in the morning alarm, and then they go to the practice area. They practice for nearly 4 hours. The girls live in a separate enclosure where outsiders aren't allowed. They live under strict discipline. The girls aren't even allowed to have any cell phones to call their families. तो आप घर कभी जाते हैं? 5 साल बाद। 5 साल बाद। तो अभी आपको कितना टाइम हो गया? ये मेरा 4 साल हो गया। I found out that these restrictions were put in place to make sure of a single-minded focus on their skills. And then I met 38-year-old Reshma. Reshma's family of 5 depends entirely on her income from the circus. गोल्डन सर्कस में 2 साल हो गया और बचपन से मैं सर्कस में काम करती हूँ। मेरे मम्मी पापा सर्कस में ही थे। मेरे पापा जानवर के मास्टर थे। मैं 8 साल में सर्कस में भर्ती हुई। उसके बाद 1 साल के बाद से मेरा शो चालू हो गया। ये सर्कस में मैं गन शूटिंग करती हूँ और पैरेट शो करती हूँ। मैं जिम्नास्टिक करती थी, झूले का आइटम भी करती थी, स्केटिंग करती थी। 3 लड़के हैं मुझे। हम लोग ये सर्कस से कमा के पैसे घर भेजते हैं। बच्चे पढ़ रहे हैं घर पे। मैंने सर्कस छोड़ के घर में बैठ गई थी, तो फिर वो आइटम करना थोड़ा मुश्किल होगा ना, तो फिर मैंने छोड़ दी। अभी इसलिए दो ही आइटम करती हूँ। और लेडीज़ लोग का जो ड्रेस होता है ना शो में पहनने का, सब मैं ही बनाती हूँ। तो घर में रुकने से बहुत प्रॉब्लम होता हम लोग को। कोई नौकरी हम लोग को सेट नहीं होता गाँव में, इसलिए बच्चों को पढ़ा रहे हैं और हम लोग सर्कस में हैं। फिर इसलिए तो हम लोग को लिए सर्कस अच्छा है। What was unsaid was the lack of opportunities that had forced her to come back to the circus, even if a little lower in the hierarchy. अगर मान लीजिए ये सर्कस बंद हो जाए अगले 10 सालों में, तो फिर आगे आप क्या करेंगे? क्या प्लान है? कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, कि जीना तो है ना। ब्यूटी पार्लर कोर्स करूँगी, ऐसा प्लान है। पता नहीं फिर क्या होगा। साल ख़त्म होंगे, जाएंगे 2 महीने जैसे बैठेंगे। उसका घर में यदि अच्छा नहीं लगेंगे तो मम्मी को बोलेंगे, वापस मम्मी ला के छोड़ देंगे। तो वापस नहीं आएंगे आप? क्यों? सही से घर में रहेंगे। For us, circus is our 2 hours of entertainment. But for these women, it's a catch-22. Can't love it, can't leave it. So they go on with their struggle, finding solace in each other to fulfill the promise they left their homes for. If you like the story, then please hit like and share the video. For more stories like this one, subscribe to 101 India on YouTube, follow 101 India on Facebook, Twitter and Instagram for more updates.